please go through the basics about Python, why we are using. Yeah, Mohammed, yes, definitely. I have these answers in this slide. Okay, talking about slide, I think the screen is visible, and these are the slides I'm using from Educators. Educators is, yeah, thank you. Welcome. Okay, and Educators is, you know, online training school. Okay, and I give a lot of full courses on Educators. तो वहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे full courses हैं, well designed, 3 months, 4 months courses. So वहाँ से मैंने I took this PPT and bring this only for you guys. I love you guys. Okay, so yeah, let's dive into this slides thing. Okay, and yeah. So the first thing here are the topics, what we are about to do in this particular slide. So probably it will answer. Okay, you want to repeat from where you get educators? Let me write in the chat. ADUCATORS. Educators. Yeah, it's educators with a A. Seriously, it's spelled like that. Educators with A, with an A. Yeah. Cool. So in this slide, I will tell you what is Python, why Python is popular, and what are the Python features, who use Python, really, who use Python, and in tech industries. Okay, I will talk about tech industries only. Okay, and learning Python at educators, and simply the sixth one is the career opportunity. Someone mentioned, okay, you are from civil engineering domain. Wow, you can be a very good architect of software को भी architects की जरूरत पड़ती है. Cool. So someone mentioned they want to, they want to hike their salary. So yeah, career opportunities. तो वो भी हम discuss करेंगे. All right. So all these things will, make a nice interest in you guys. Why actually you are about to learn Python? Because if I just dive into the code part, it will be like, why I'm doing this? Okay, so I really want to make a nice community. We will keep on continuing these sessions, so don't worry. I will not put everything in the very first class on you. Don't worry, it will be nice fun live streams. Cool. Let's go to the next one, and here let's answer what is Python. Okay, so in starting in the very first point, I mentioned three things. Okay, Python is a general purpose. Yeah, three things: general purpose, high level, and interpreted language. Okay, so what is Python actually? Python is a general purpose language. Python is an interpreted programming language with dynamic syntax. Oh wow, cool. It's nice to have some prior knowledge. Cool. So general purpose. So general purpose का मतलब होता है ये एक ऐसी language है that can be used in any domain basically. So someone asked अभी थोड़ी देर पहले कि which is the best framework. So I asked कि web में कि desktop में, right? So that means you can write Python for your web applications. You can write Python for your desktop applications. Okay, and yeah, you can write Python for anything, right? And the next technology we like that is about to come, yeah, that's blockchain, Web3. I think you guys know about Web3. Yeah, blockchain, Web3, Bitcoin तो सुना ही होगा सबने. Yeah, even to write programs for Web3, you can use Python also. Yeah, high levels mean, okay, high level सुनकर के ये मत समझना कि it's a high level thing, it's a big thing. और मे बी इसका अपोजिट हो सकता है लो लेवल, तो वो पुअर होगा, ऐसा नहीं है. ओके, सो हाई लेवल का मतलब होता है कि दिस लैंग्वेज इज वेरी वेरी नियर टू योर नेचुरल लैंग्वेज विच इज इंग्लिश. हम मान के चलते हैं कि ग्लोबल लैंग्वेज इज इंग्लिश, तो जो इस ग्लोबल लैंग्वेज के काफी क्लोज है, यू कैन स्ट्रेट अवे रीड
लाइक अ सेंटेंस, इंग्लिश में लिखा हुआ सेंटेंस आप पढ़ सकते हो, या वैसे ही आप पाइथन का कोड भी पढ़ सकते हो। एंड इफ अ लेमैन रीड्स अ पाइथन स्क्रिप्ट, उसको भी समझ आने लगेगा कि ये स्क्रिप्ट क्या कर रही है, बिकॉज इट्स वेरी वेरी, इट्स इन वेरी वेरी सिंपल सिंपल वर्ड्स, कीवर्ड्स बहुत सिंपल हैं, बहुत जाने पहचाने कीवर्ड्स आपको दिखेंगे वहाँ पे जो आप नॉर्मली ग्रामर में यूज करते हो। सो आई थिंक ये दो चीजें आपको क्लियर हुई, वट इज अ जनरल पर्पस एंड वट इज हाई लेवल। या गिव मी अ क्विक यस। Yes, yeah, cool, cool, nice. Yeah. So general purpose means you can use Python for any domain, and high level means it's very close to your English language. Last thing is interpreted. अब ये interpreted क्या चीज़ है? It is related to how your code. Okay, all right. So we have one more Aditya. I have just finished my 12th standard exam and I was looking for starting coding. I heard from everyone that initially we start by learning C language. What should I pursue? So you just finished your 12th board exams. I think result अच्छा आया होगा. And if you pursue, BTech in CS or you go for BCA, so ये कंप्यूटर साइंस के जो भी यू विल फाइंड कि कौन कौन से कोर्सेज हैं कंप्यूटर साइंस के लिए. तो अगर आप कंप्यूटर साइंस सॉर्ट ऑफ कोई भी कोर्स पिक करते हो तो डेफिनेटली यू विल हैव सी लैंग्वेज इन दी स्टार्टिंग सेमेस्टर. और कई कॉलेजेस में अभी भी पाइथन को एज अ करिकुलम ऐड नहीं किया गया है. वन ऑफ द बिग यूनिवर्सिटी, आईपी यूनिवर्सिटी, या वहाँ पे पाइथन को एज अ करिकुलम ऐड नहीं करा हुआ है. बट वी हैव सम अदर यू नो यूनिवर्सिटीज जहाँ पर है करिकुलम में पाइथन. ओके, सो इट डिपेंड्स कि आप किस कॉलेज में या किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो. सो प्लीज चेक द करिकुलम, उनका करिकुलम पहले चेक कर लो एंड देन मेक योर डिसीजन कि आपको यहीं से करना है या फिर यू कैन लुक फॉर अदर ऑप्शंस. या आई होप यू आई आंसर्ड योर क्वेश्चन. Cool. So let's move to the interpreted thing कि interpreted क्या होता है. Yeah. Okay. So interpreted means how your computer gonna read your Python code. Okay. Python training के बाद क्या करें? You can do anything after doing Python training. You can visit abroad. You can fly abroad. You can do anything after learning Python. But in terms of career, you can. I have completed my MCS in 2015, so I again want to enter an IT. It is easy to me to learn Python. Yeah, yeah. MCS, I think वहाँ पर आपको एक डेटा स्ट्रक्चरल एल्गोरिथम ये सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रेनिंग मिल गई होगी ऑलरेडी 2015 में. Now it's 7 years and you want to do a comeback. Yeah, you want to come back in IT, definitely. IT always welcomes. Yeah, so it will be very very easy. I consider this thing, C language, Shweta, C or C plus plus, data structure. I have a TCA 1 year diploma. I can learn Python. Yeah, definitely. It is mandate to have BTech BCA. I have done BSc Maths and MSc Physics. Wow. So after doing BCS in Maths and Physics, you want to rule computer science field. Yeah, definitely you can do that. If you know mathematics, it will be very very easy
to grab algorithms. Yeah, your mathematic background will give you a very nice, uh, backup to have the understanding of algorithm क्या कर रहा है कैसे काम कर रहा है, how we can do fast things. You can do that. BTech or MCA, which have higher opportunities in IT industry. Talking about your resume, I think BTech is very very nice. But if you have something in masters, so masters will get the not priority, but एक upper hand मिल जाएगा because you have masters. But they will check you because after doing MCA, still कुछ कुछ courses होते हैं BTech के अंदर, तो those are a bit technical, जो शायद MCA में cover up नहीं होते. Yeah, so probably they will check you on that. I have 3 year experience in web development with 15K per month. Web developers को इतना कम salary कैसे मिल रही है? They are the one जिनको काफी अच्छा पैकेज मिलता है. Yes, sir, I know PHP, C, C++, .NET, SQL, and Java. You already bundled with a lot of things, Shraddha. You know, C, C++, .NET, SQL, Java is a lot. If you add Python to it, but one thing you should frame, like it will advice from my side, you should frame, a framework for yourself. For example, if you want to go into web, so frame what framework will be best for you. For example, if you're learning Python, then you can, and if you want to go to web development, so you can learn Django. So Python and Django will have a nice bundle. And then HTML, CSS, JavaScript is a very common bundle to have in web development. Cool. Okay, guys. So I think I answered all your questions. So let's come back to the interpreted language. So interpreted language क्या होता है? Interpreted and compile. We have two types of approaches. Okay, how your computer reads your Python program. We have two options. Either we can go for compiler or we can go for interpreted. So Python pick interpreted approach. ओके क्या डिफरेंस है इनके बीच में? वेरी सिंपल वन. दोनों का काम है कंप्यूटर के टर्म्स में, लाइक वन जीरोस. कंप्यूटर अंडरस्टैंड वन जीरोस, राइट? तो उस तरीके से कंप्यूटर के सामने आपके कोड को प्रोवाइड करना, दोनों का सेम काम है. बट कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर वन गो में आपके पूरे प्रोग्राम को पढ़ लेगा एंड देन इट विल कन्वर्ट योर एक्चुअल डॉट सी और डॉट cpp फाइल इनटू some object file. Okay, that object file is readable for your computer, and when you execute your that file, it will give you the expected output. But in the case of interpreted, it will read your .py file line by line. Okay, line by line read karega. And for example, you write 10 lines in your code and you have some error on the fifth line. So how Python will do? Python will execute first 4 lines and stop at the fifth line. This is interpretation because Python is executing line by line. But अगर ये same case होता कि you write 10 line code in your C language and you compiled it, so compiler उसको first place पे ही object file में convert ही नहीं होने देता. Okay, compiler उसको वहीं पे रोक देता कि पहले fifth line वाला error सही करो, तब then I will create the object file. But Python ऐसा नहीं करेगा. Python first 4 lines successfully execute कर देगा and then fifth पे आकर के रुक जाएगा. So इस चीज़ के अपने फ़ायदे भी हो सकते हैं, इस चीज़ के अपने नुकसान भी हो सकते हैं. फ़ायदा ये हो सकता है कि इट विल बी वेरी हेल्पफुल इन डीबगिंग. सो इफ़ यू हैव एरर राइट, तो आपने फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट कर लिया, सेकंड सक्सेसफुल हो गया, थर्ड सक्सेसफुल हो गया, आप साथ साथ में आउटपुट भी देख पा रहे हो. या एंड फिफ्थ लाइन पर आपको पता लगा कि एरर है, तो यू सॉल्व द फिफ्थ लाइन एरर एंड देन यू स्टार्ट रनिंग अगेन. और यही सेम चीज़ इसका नुकसान भी हो सकता है कि यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टू मेक योर कोड वर्किंग, बिकॉज एक लाइन पढ़ के देन यू हैव टू सॉल्व इट एंड वापस से स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा एग्जीक्यूट करना. सो everything have two faces, like a coin. Yeah, coin has two faces. I'm write first code with PyCharm. Yeah, PyCharm is the Python IDE. It is a small digital marketing company located in my home. Okay, you're answering the previous question. Okay, cool.
Okay. Yeah, Nikit, PyCharm is just a Python ID. For beginners, I really don't recommend IDs. Okay, write your code in text editor, normal text editor. Open your notepad and start writing code. Okay, I really don't encourage beginners to write code in IDs. Okay. All right, so let's move to the second point, easy syntax and dynamic semantics. So ये चीज आई थिंक आयुष ने या फिर किसी ने मेंशन की थी. चलो काफी ऊपर चला गया चैट. Okay, so dynamic semantics. So what is this thing? Easy syntax. Easy syntax तो सभी ने मेंशन किया था. Why you are learning Python? Easy syntax, easy to learn. जल्दी आ जाएगा समझ. नहीं ऐसा नहीं है. आ जाएगा समझ. आई agree on that. Easy syntax है cool, yeah. First of all easy syntax है. And dynamic का मतलब क्या होगा? uh, in compiler based languages या फिर C language या C++ languages जो पुरानी languages थी, even your Java, if you want to use some variable, okay, so you have to declare them first कि आप किस टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो या फिर यूज करने वाले हो. For example, we have a lot of domains. We have number domain, we have string domain, we have complex domain. Yeah. So domain matlab data types could be number kind of data types could be your integer, your float, your complex number, right? वो सब आपके numbers में आएंगे. If you talk about string, so that's the collection of your characters, right? So a lot of we have data types. सो इन पुरानी लैंग्वेजेस में क्या होता है, यू हैव टू मेंशन फर्स्ट कि आपका ये वेरिएबल इस डोमेन को बिलोंग करता है एंड यू कैन नॉट चेंज इट. आप अगर आपने एक वेरिएबल बनाया abc, सो वो abc वेरिएबल हमेशा int, लाइक लेट्स सपोज आई डिक्लेयर int abc, तो abc हमेशा इंटीजर ही रहेगा. हमेशा मतलब उसके पूरे लाइफ टाइम में. लाइफ टाइम इज समथिंग दैट यू कैन यू गेट टू नो आफ्टर नोइंग द स्कोप. स्कोप डिसाइड करता है कि किसी वेरिएबल का लाइफ टाइम क्या होगा. सो थोड़ा डिटेलिंग चीज़ होगी, थोड़ा बाद में आएगी उसके ऊपर. बट इन इन ओल्डर लैंग्वेजेस इफ यू डिक्लेयर समथिंग ऑफ टाइप इंटीजर तो वो थ्रू आउट द लाइफ अपना इंटीजर ही रहेगा. बट इन पाइथन you can change the type of abc from int to maybe float to maybe string, even to maybe complex, anything you want. Okay, it's a very beautiful thing. Everyone knows Python supports dynamic semantics, but why, like how Python do this thing, how Python do this trick, I will tell you that. Don't worry, I will tell you that how Python do this trick. And finally we have the creator, the Guido van Rossum, the very nice guy. He created Python in 1989. Yeah. So I think someone mentioned year 1994, किसी ने chat में mention किया था. That is also correct. वो कोई version आया था उस year में, but actual Python जो code ready था वो 1989 में था. Okay, so you guys find interesting, यहाँ तक मजा आ रहा है. First version. From learning C language, which one would be easier, VS Code or Turbo C++? Turbo C++ is not the standard. सूरज, टर्बो सी प्लस प्लस कोई सी और सी प्लस प्लस के स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनको फॉलो नहीं करता है. इट्स क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट. आई थिंक समवेयर माइक्रोसॉफ्ट हैज समथिंग टू डू विद इट. Yeah, but it's not standard. It don't follow a lot of standards which you have to follow when while writing C and C++. And VS Code is just a text editor. As I told you, don't use text editor. You can simply use don't use IDs actually. Don't use IDs. IDs will help you to write code, and I really don't want you to take help for writing your code. Okay, so don't be like PR enter करा और फिर print लिख करके आ गया. अदरवाइज यू विल बी लाइक, अगर आपको कुछ प्रिंट करना है सो यू हैव टू डू PR एंड एंटर, तो ऐसा याद हो जाता है आपके फिंगर्स को. इट्स नोन एज मसल मेमोरी. आई डोंट वांट योर मसल टू रिमेंबर दिस थिंग. आई वांट योर मसल टू PRINT कंप्लीट लिखो. ओके, सो डोंट डिपेंड ऑन एनी आईडी. और जब यू व्हेन यू सिट इन
in an interview, you will not get any ID. Okay, they will not say you are a Python developer. Hey, here we have PyCharm. Here we have VS Code. Write your code here. No, they will give you a Google Doc to write your code, or they will give their own editor maybe, जिसको वो बाद में चेक करेंगे how you write the code, what was the quality of your code, वो बाद में वो चेक करेंगे अपने एडिटर से. तो या वहाँ पर आपको पूरा लिखना पड़ेगा. So don't be dependent on any IDE. Start writing, start using any simple text editor. If you're on Windows, use Notepad. Jupyter Notebook also. Yeah, Jupyter Notebook. वहाँ पे तो starting में कोई भी नहीं जाता. Jupyter Notebook, when you do, you know, visualization, like basically I use Jupyter Notebook when I have to do visualization, because वहाँ पे easy हो जाता है. I just click the shortcut, क्या था उसका, I can't remember the shortcut, but if you run the run button, you will get your graph right there. So आपको रन नहीं करना पड़ता, रन करके दूसरे स्क्रीन पे नहीं जाना पड़ता, वो एक काम बच जाता है. But I use Jupyter Notebook for visualization. Yeah, cool. Okay. मजा आ रहा है. Very nice, guys. You are so interactive. Okay, so let's answer this question. Why this Python is so popular? अपने early days में नहीं थी Python इतना popular, but it has a nice comeback. Okay, I think we have someone जिन्होंने कहा था कि they will have a comeback. So see, you can have a comeback anytime. Python ने भी comeback करा था with a very very nice you know ideas, syntax तो starting से easy था खैर. Okay, so why Python is popular? The first reason will be definitely easy for everyone. Okay, it's easy for everyone. Yeah, easy and for everybody, basically. Open source, yeah, one of the beautiful thing in our industry, which is open source. Okay, in today's world, if you use C language for free, if you use C++ for free, thanks for open sourcing. राइट. उस टाइम पे ओपन सोर्सिंग नहीं कहा जाता था, उस टाइम पे कहा जाता था कि वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग आवर सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट. सो फ्री सॉफ्टवेयर के नाम से जानी जाती थी ये चीज़ें. ओपन सोर्स एक बहुत ही फैंसी वर्ड है जो अभी रिसेंटली हमारी कम्युनिटी में ऐड हो गया. बट या स्टार्टिंग में फ्री सॉफ्टवेयर कहा जाता था. तो सी एज अ फ्री सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूट किया गया था. Python packages, yeah, a lot of packages are open source. You can simply read their code. जो built in आते हैं उनको तो जाकर के आप लोकेशन पे you can double click and simply open that Python file. You can read the code कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है. If you want to read a specific package code, you can go to the GitHub पे जाकर के, because सबने अपना GitHub repository बना रखा होता है. People come and post the bug कि भाई हम ये यूज कर रहे थे, वी एक्सपीरियंस सम बग, प्लीज सॉल्व इट. नेक्स्ट वर्जन में वो सॉल्व कर देते हैं उस चीज को. यू कैन यूज गिटहब. या राइट. Third reason why Python is so popular, used in desktop, web, mobile, you call it everywhere. You can use Python. Okay, you just name any domain, you can, you will find any use case. कुछ कुछ ना कुछ यूज केस वहाँ पे उस डोमेन में आपको मिल जाएगा पाइथन का. So you can create desktop application, you can create web application, you can even create mobile applications using Python. Okay, and finally, the great community. See, you guys are starting your Python journey from today. Yeah. So maybe later on you will become the community of Python. You guys will, you can form a group on the internet. You can create a Discord, get to know each other, write code, solve, help each other. You can form a community. And we have a lot of community for Python too. So Python को जो बना रहे हैं python.org, a lot of people donate them. बहुत सारी बड़ी organizations donate करती हैं python.org को. And we have a lot of people who work with for solving the Python bugs, नए features create करना. A lot of people do that. If you are following Python, अभी recently, okay, let's have a nice question. जो पहले आंसर देगा जीत जाएगा.
क्या जीतेगा? I will give a shout out. Okay, so tell me the latest version of Python. Write in the chat, latest version of Python. Yeah, yeah, cool, cool, nice. So you guys are updated. Nikit, you are a bit more updated. Why? We yeah, it's soon, but it's not the latest version in the market. Very smart answer. Yes, 3.10, correct, correct. 3.10, 3.10 is the latest version, latest tested version. Yeah, stable. 3.10 is the latest stable version. एंड 3.10 के बाद जितने भी आप 1 2 3 4 लिखो वो मंथली वो रिलीज करते रहते हैं, कुछ कुछ चीजें इंप्रूव करके वो रिलीज करते रहते हैं. बट 3.10 इज द लेटेस्ट वर्जन जो 4 अक्टूबर 2021 को रिलीज हुआ था. एंड आई मेड अ वीडियो ऑन इट. तो आप जाकर के मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो उस वीडियो को. मैंने बहुत अर्ली डेज में पोस्ट कर दिया था उसको. सो मेनी पीपल लाइक इट. एंड या, सो 3.10 इज द लेटेस्ट वर्जन. एंड इनका जो ऑर्डर या फिर कह सकते हैं फैशन रहता है, वो अक्टूबर के मंथ में ही रिलीज करते हैं अपने पैचेस को, स्टेबल पैचेस को. बट आई एम यूजिंग 3.8 विंडोज 7. हाहा. Yeah, go and update it. Why not? Cool. So you guys are updated. Very nice. All right. So what are the features of Python? So again, the Python is simple. So simplicity is one of the feature. It's open source is one of the feature. Portability, you can port your application from one OS to another OS without any issue. Embedded and extensible. आप embedded devices के अंदर use कर सकते हो Python को. You can use Python. There is a lot of distributions of Python. Probably I have mentioned in this slide. शायद नहीं, इस स्लाइड में सारे डिस्ट्रीब्यूशंस को मैंने मेंशन नहीं करा हुआ बिकॉज हाई हेलो काइंड ऑफ, सो आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल. बट वी हैव अ लॉट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस फॉर पाइथन. वी हैव पाइथन फॉर जावा डेवलपर्स, दैट इज नोन एज आयरन पाइथन. एम्बेडेड के लिए हमारे पास आई थिंक दैट्स नोन एज माइक्रो पाइथन. सो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस हैं. Yeah, for Raspberry Pi also. Raspberry Pi, your latest Ubuntu 22.04 is can be installed on Raspberry Pi, and the Ubuntu 22.04 comes with the Python 3.10 by default installed. So yeah, you can use Python on Raspberry Pi too. Yeah. Fifth feature is it's interpreted. Huge library. Sixth one is the huge library. Python has a very huge library, and it is one of the top notch reason why Python is popular, because it has a very huge libraries. Okay, हर फील्ड के लिए इसके बाद लाइब्रेरी है. फॉर वेब डेवलपमेंट Django is the library. Flask is the library for web development. If you are looking for web scraping, so beautiful soup, web scrap, मतलब बहुत सारी वहाँ पे आपको libraries मिल जाएंगी web scraping में भी. If you're doing let's say data visualization, you have matplotlib. So awesome library, matplotlib. Pandas, NumPy, so awesome libraries we have. And the seventh, final one is the object orientation. Object orientation makes your programming language, very strong. Already built-in libraries. Yeah, we have a lot of built-in libraries. The math, the random, a lot one. OS, sys, बहुत सारी libraries हैं जो built-in है, and those are very very helpful. Cool, very nice, very nice. Okay, so these are the reason why, like these are the features of Python. So who use Python in tech industry? So a lot of big giants use Python actually. Don't be like a blind guy कि गूगल का नाम लिख दिया तो गूगल ओनली यूज पाइथन, ऐसा नहीं है. हर एक जाइंट यूज अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी. जैसे मैंने कहा ना कि स्टैक, दे यूज अ लॉट ऑफ टेक स्टैक. ओके, टेक स्टैक आप एक वर्ड कहा जाता है टेक स्टैक. व्हाट इज योर टेक स्टैक? सो गूगल यूज अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी इन देयर हाउस. और कभी कभी तो ये खुद का ही बना लेते हैं.
इफ यू आर फॉलोइंग द न्यूज, सो सी प्लस प्लस का इन्होंने किलर वर्जन बना दिया अपने ही घर में, विच इज कार्बन. या कार्बन. So I'm very excited about कार्बन एक्चुअली. उसका कोड बहुत ज़्यादा गोलांग जैसा भी दिखता है, जो मैंने स्निपेट्स देखे हैं. आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. गोलांग इज अनदर लैंग्वेज जो सी लैंग्वेज जितना, सी का ऑल्टरनेटिव. सो दे हैव गोलांग. So Dropbox use Python, Netflix use Python. Your favorite BitTorrent. Quick question again: how many of you use BitTorrent, or just Torrent? How many of you use Torrent? Torrent, Torrent. Yeah, yeah, just one. Not possible. Like, I guess. Yeah, now you guys started. Correct, correct. Torrent is something जो um cool. Very nice, very nice. Okay, very good, very good. You can never be blocked. Yeah. Okay, guys. Okay, finally we have, not finally, a lot of big giant companies use Python language, but I mentioned the five of them. Yeah, cool. NASA also use Python. Actually, NASA use Python in one of their project. मैंने I think यहाँ पे इसका नाम mention नहीं करा project का, but those nodes जो हम actually educators में distribute करते हैं, वहाँ पे we have a lot of more information on it. Okay. So जैसे मैं mention कर रहा था कि we have educators and you can learn if you are you want to do a deep dive in a structured course, regular structured course. You can also try educators. Yeah. So if you click on this, you can go to my हम लास्ट में चलेंगे उस पर, don't worry. And I will move to the next one, career opportunities. This is the final one, final slide I think for the day. um, career opportunities, and इसके बाद भी काफ़ी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए, so just hold on. Okay, so let's talk about the most fruitful thing, career opportunities. Python सीख के क्या ही कर लेंगे? Yeah, correct, correct. A lot of giants use Python. So career opportunity में सबसे टॉप पे मैंने रखा वेब डेवलपमेंट को, बिकॉज वन ऑफ द हॉटेस्ट टॉपिक. हमेशा डिस्कशन में वेब डेवलपमेंट बिकम्स द हॉटेस्ट टॉपिक. सो वेब डेव को मैंने इसलिए सबसे ऊपर रखा था. So web development and frameworks. So career opportunities, you have this thing, Django. I think someone mentioned Django. So for those people who don't know Django, Django is the most nicest framework I have ever used. बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन है. और प्लस जैसे आई आई लाइक टू राइट कोड. मैं जस्ट डिवीजन के साथ या फिर जस्ट स्ट्रक्चर के साथ आई लाइक टू राइट कोड. जैंगो एग्जैक्टली उस वैसे ही काम करता है. सो दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट जैंगो. या. Second is web testing. You can write test cases. Yeah, unit testing is something which is very very important. So you can write unit testing using Python. You can do game developments is being used in game dev also. Yeah, yes, yes. मैंने starting में भी mention किया था कि me and my friend write uh, Flappy Bird game. फ्लैपी बर्ड गेम हमने बनाया था पाइथन के अंदर ही. इवन हमने मारियो लुकिंग मारियो भी बनाया था. yeah. वो गेम डेवलपमेंट में ज़्यादा था माय फ्रेंड. बट आई एम नॉट वेरी मच इनटू गेम डेवलपमेंट. Any framework or popular libraries? Yeah, I think we first of all you need TK Inter. Pygame is one of the library. Pygame is very famous for developing games in Python. TK Inter is used for desktop applications, so definitely I'm using desktop. So desktop application बनाने के लिए I use TK Inter.
Yeah, to learn Django, it will be enough. If you know Python basics, you can go for Django. But before hitting Django, just have some basic understanding how web client architecture works. Master server वाला architecture कैसे काम करता है, TCP/IP कैसे काम करता है. Not necessarily TCP/IP, but have an enough idea कि how actually web server works. That will help you a lot to understand how Django approaches the problem. Yeah. एंड डेफिनेटली एआई डेटा साइंस, ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता किसी ने नहीं सुना हो कि हम मशीन लर्निंग सीख रहे हैं और पाइथन सीख रहे हैं. वी आप लोग प्रॉब्ली यूट्यूब बहुत ज़्यादा करते होगे बिकॉज यू ऑल आर सेल्फ लर्नर्स. आप यूट्यूब पे काफ़ी डिपेंडेंट रहते हो. या सो वहाँ पे एड्स आते हैं यूट्यूब पे. सो यू वांट टू बी अ एमएल मशीन लर्निंग sort of guy, so you have to learn Python. So yeah, Python is used here. Big data के अंदर, smart devices के अंदर. So smart devices are those devices that are connected to your network and you can do a lot of things. For example, you can switch on your fan, switch off your fan, switch on your lights. You can do a lot of things smart devices के through. So उसको भी आप Python पे design कर सकते हो. So Python has a big uh, you know domain. आप कहीं पर भी लगा सकते हो उसको. So that's why it is known as general purpose language. मैंने अपनी first slide में ये चीज़ explain करी थी. Python is a general purpose language. You can use it anywhere. And yeah, that's it for the slides. So thank you for going through all these slides, and happy learning. This is the website educators.in. You can visit our website educator.hi@gmail.com is the Gmail ID, and next you will find the contact number. So if you want to connect with us, so you can call on it. If you have any query, you can write on this mail. Yeah, and hold on now, we have